అదరకొద్దు మీరు పొద్దు వెళ్ళి పక్కకు మేడం మేడం కరెక్ట్గా ఉండమ్మా ఎవరికి నీకురా అమ్మా ఎవరైనా రా To the Government, Health and Medical and Family Welfare Department, respected MT Vishnu Garu IAS. We heartily welcome you, sir. Come on, everybody, put your hands together loudly once. Critical care blocks, biosafety lab, National Center for Disease Control, and also inauguration session లో మన గౌరవ ముఖ్య అతిథులందరూ కూడా ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్స్ ఎగ్జిబిషన్ ని విజిట్ చేస్తున్నారు. Why we only got 30 now is we have already commenced this year, and next year we are going to do one more tribal Paderi, sir. This is the completely tribal. Paderi is totally tribal agency. This also is the third medical college. We are going to complete this one. Other programs like that increase in inauguration ceremony of 7 for the contribution of towards the health department. Once again, thank you very much, sir, for having here. Please welcome all to the stage. Malaji Vishnu Garu, respect Union Minister Garu. Our respected President Srinivasa sir is done. We heartily welcome MP Anakapalli, respected Satyavati Garu. Please welcome Mr. Babu Garu IAS. Heartily welcome all to the stage, sir.
expose divine light, knowledge, and the destructions of ignorance. మన గౌరవ ముఖ్య అతిథులందరూ కూడా జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసి ఆన్ టు ద స్టేజ్. Health Department, Honorable Minister for Health to visit Andhra Pradesh to kickstart some of the important infrastructural developments being. ట్యాక్స్ ఇస్తారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం సార్. Thank you, sir. We are planning 5-floor building, duly dovetailing our Nadu Nedu funds, which are given to the. My heartfelt gratitude to Dr. Manshuk Lakshmanbhai Mandavyaji, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Government of India. My colleagues and esteemed officers from Government of India and the Government of Andhra Pradesh, respected healthcare professionals, ladies and gentlemen, today is a significant milestone as we gather to lay the foundation stone for 2 critical care blocks, a total of 14 CCBs allocated at a capital cost of rupees 350.25 crores in the BSL-3 laboratory. Additionally, we celebrate the inauguration of 7 integrated public health laboratories across the state with 13 IPH cells. My heartfelt appreciation to our esteemed guests and Dr. Manshuk Mandavya Bhaiya, the Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Chemicals and Fertilizers, Government of India, and all his dedicated efforts. And today, his efforts and his contribution is truly commendable, and it marks the momentous occasion in our commitment to advancing the healthcare infrastructure in the state of Andhra Pradesh. Let me begin by expressing my heartfelt gratitude from the government of Andhra Pradesh to Dr. Manshuk Lakshmanbhai Mandavyaji, whose relentless, dedicated efforts to health and family welfare has been a guiding force for the nation. Sir, your presence here today is an honor, and we appreciate the unwavering support and invaluable guidance you have extended to the state of Andhra Pradesh. Under your leadership, the Government of India, the PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Machine has been a transformative initiative. Under your guidance, the Government of Andhra Pradesh, our Honorable Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, he's been a driving force in regards to our health sector. And now, especially the support what we have been receiving from the government of Andhra Pradesh, the PM ABEAM, which is launched in 2021. This scheme aims to strengthen the health systems and institutions, building resilience capable of responding to health emergencies. The substantial allocation of 1271.24 crores to Andhra Pradesh under PM ABEAM is a testament to the commitment of robust healthcare facilities in the state. Integrated public health laboratories, 13 IPHCLs, promoting coordination between health and allied departments and progressing well with 10 completed and 3 underway. Critical care blocks, the construction of 14 CCBs managing emergency and intensive care services is advancing swiftly, contributing significantly to reducing the burden on tertiary care facilities. BSL-3 lab, the establishment of this major milestone in public health will lay the foundation stone for the upcoming BSL-3 laboratories designed by the critical element for strengthening of surveillance of infectious disease and outbreak response. The investment in preventive healthcare, Village Ayushman Arogya Mandir, an investment of 1692 crores in establishment of 10,032 village Arogya Mandirs, emphasizing preventive healthcare accessibility. Primary healthcare centers, renovation of 977 and construction of 148 new PHCs with a budget of 670 crores. Enhancing healthcare infrastructure, upgrading 11 existing government medical colleges and attached institutions with an investments of rupees 3,820 crores, and establishing 17 new government medical colleges with a total investments of 8,480 crores, ensuring a steady supply of healthcare professionals. Arogyasri and Arogya Asara schemes, insurance coverage, providing health insurance coverage of up to 25 lakhs to over 1.48 crore families, which covers 90% of the population in this state.
financial assistance. Arogya Asra to take care of wage loss during the recovery phase by paying rupees 225 per day up to a maximum of rupees 5,000 per month for 1590 procedures. The state government is spending rupees 4,100 crores per annum under Dr. YSR Arogyasri Healthcare Services along with Dr. YSR Arogya Asra scheme. Jagananna Arogya Suraksha program, a comprehensive healthcare program aiming to offer doorstep healthcare services and facilitate the treatment at higher level and healthcare facilities adhering to the principles of inclusivity. Family doctor program, an innovative endeavor unparalleled in the nation, is bringing healthcare within the reach of rural communities, profoundly impacting the lives. Bhaiya, I am confident that witnessing the dedicated efforts of our doctors, and this initiative will lasting an impression definitely on the state, and definitely it is going to change the healthcare in the coming forward generations. In inclusion, I extend my gratitude to all the stakeholders who have contributed to the success of these initiatives. The support of the Government of India, coupled with the vision and leadership of our Honorable Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, has propelled the Andhra Pradesh towards a future of accessible, affordable and comprehensive healthcare. As we lay the foundation of the critical care blocks, integrated public health laboratories and BSL 3 lab today, let us collectively envision a healthier Andhra Pradesh. Our commitment to healthcare will continue to shine brightly in the years ahead, ensuring the well-being of each and every citizen. As I bring my remarks to a close, the concept of envisioning a developed India by 2047, named Vikasit Bharat, is not only an inspiring but also sets a positive precedent for all the states. Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of Chief Minister Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, is poised to lead the way in realizing the vision established by the Government of India. Thank you, and may our collective efforts pave the way for healthier and prosperous future in the state of Andhra Pradesh. Thank you all. Thank you, ma'am. Now, आंध्र प्रदेश में आज कई प्रकल्प का शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राज्य की यशस्वी हेल्थ मिनिस्टर रजनी जी, हमारे सांसद श्रीनिवास जी, हमारी दूसरी सांसद डॉक्टर सत्यावती जी, मल्लारी विष्णु जी, हमारे मेयर भाग्यलक्ष्मी जी, मंच पर उपस्थित सभी सीनियर अधिकारीगण, उपस्थित भाई एवं बहनों, आज हमने क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया, BSL 3 लैब का शिलान्यास किया और कई इंटीग्रेटेड लैब का लोकार्पण भी करा। दोस्तों, कोई भी राज्य को, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो ये देश की प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश के नागरिक स्वस्थ हो। स्वस्थ नागरिक, हेल्दी सिटीजन, हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करता है और हेल्दी सोसाइटी होती है, सारी सोसाइटी, सारा समाज हेल्दी होता है तो देश को समृद्ध राष्ट्र बनने में मदद करता है। और इसलिए मोदी जी ने हेल्थ सेक्टर को हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ देखा। एक समय ऐसा था कि कोई लीडर आते थे, कहते थे मेरे यहां अस्पताल बना दो, तो जो पावरफुल लीडर थे उसके यहां अस्पताल बन जाती थी। कई जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था खड़ी हो जाती थी, कई देश के पार्ट व्यवस्था से वंचित रह जाते थे। मोदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा,
हेल्थ एक्सेसिबल होनी चाहिए, हेल्थ अफोर्डेबल होनी चाहिए, सभी को स्वास्थ्य सुविधा का अधिकार मिलना चाहिए और इसलिए होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ सेक्टर में काम करना चालू करा। नतीजा ये निकला, आज देश में 1,70,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 5 to 6,000 पॉपुलेशन पर 1 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 10 टाइप ऑफ टेस्टिंग वहां हो सकता है। वहां वेलनेस के लिए प्रयास होता है। वहां कोई पेशेंट जाते हैं, उसका प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का, ओरल कैंसर का प्राइमरी टेस्ट हो जाता है ताकि पता चल जाता है कि कोई बड़ी बीमारी आगे तो नहीं बढ़ रही है ना। जब कोई भी डिसीज प्राइमरी लेवल पर होता है, उस वक्त जो डिटेक्ट हो जाता है उसका इलाज अच्छी तरह से हो सकता है। सेकंड में मोदी जी ने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना है, डॉक्टर चाहिए, वहां नर्सिस चाहिए। हम केवल अस्पताल बना देते थे और देश में डॉक्टर की कमी थी। दोस्तों, आजादी के बाद 67 इयर्स में 350 मेडिकल कॉलेज थी, केवल 9 साल में दूसरी 350 ऐड कर दी। आज 707 मेडिकल कॉलेज देश में है। Our student go in a medical study go to abroad. वो अब्रोड जाते थे, क्यों? क्योंकि यहां ये फैसिलिटी नहीं थी। मेडिकल कॉलेज बढ़ाई, 54,000 सीटें थी। नाउ एंड टुडे 1,07,000 MBBS की मेडिकल सीट है। नर्सिंग, अभी मोदी जी ने डिसाइड किया, एक 157 जो पहले मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गई है, सभी जगह पे नर्सिंग कॉलेज होनी चाहिए ताकि हेल्थ वर्क फोर्स देश की रिक्वायरमेंट के लिए उपलब्ध हो। ये सुनिश्चित कर दिया तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना, उसमें डॉक्टर की सुविधा होने लगी। उसको स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ जोड़ने के लिए बहुत समझने की बात है। जो कोई गरीब लोग होते हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाते हैं और वहां से टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी चालू करी। एम्स के साथ उसको जोड़ दिया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ उसको जोड़ दिया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एम्स वो हब बन गए और हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर वो स्पोक बन गया। दोस्तों, मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली से एम्स का एक न्यू कैंसर सेंटर बना है झज्जर, और से 54 किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली में वहां जा रहा था इन हरियाणा। तो रास्ते में मैंने किसी को बताया नहीं था, मैं निकला और बोर्ड लगा था आयुष्मान आरोग्य मंदिर। मैंने पूछा नहीं, ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको। मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में चला गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गया, एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक पेशेंट को देख रही थी। उसको पता नहीं था कि मंत्री जी उसके पीछे आके खड़े रह गए। वो टेली कंसल्टेशन कर रहे थे पीजीआई चंडीगढ़ के एक एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ। वो कंप्यूटर में उसके सामने था, पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बात कर रहे थे, पेशेंट बगल में बैठे थे। और पीजीआई के डॉक्टर ने कहा कि जरा पेशेंट से भी मुझे बात कराओ। तो उन्होंने थोड़ा कंप्यूटर मोड़ा और पेशेंट के साथ पीजीआई चंडीगढ़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उससे बात करी, उसका रिपोर्ट बताया। डॉक्टर वहां बैठा है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप उसको इस टाइप की मेडिसिन लिख दो, 1 सप्ताह के बाद फिर एक बार टेली कंसल्टेशन से जुड़ जाना। दोस्तों, एक घटना महत्वपूर्ण इसलिए है, एक गरीब परिवार के व्यक्ति शायद उसको वहां से रेफर कर देते कि जाओ आप दिल्ली चले जाओ, 1 दिन का काम जाता, उसका पैसे का खर्च होता। गरीब व्यक्ति के जेब में पैसा नहीं होता है। दोस्तों, टेली कंसल्टेशन डेली 3 to 4 लाख टेली कंसल्टेशन के द्वारा लोगों का इलाज हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना से
देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की मोदी जी ने गारंटी दी है। आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट, मुझे खुशी है, आयुष्मान भारत योजना अपने स्टेट की योजना को संयुक्त रूप में बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है। उसका फायदा गरीब लोगों को हो रहा है। होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ को आगे बढ़ाते हैं। 22 स्टेट में एम्स बनाई गई। अभी आपके यहां एम्स डेवलप हो रही है। धीरे धीरे 4-5 साल में ये एम्स इतनी डेवलप होगी, वो सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी मार्गदर्शन करेगी और टर्शरी केयर के लिए, स्पेशलिटी सुविधा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में दोस्तों देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत में देश के हर नागरिक स्वस्थ हो, ये प्राथमिकता होती है। और इसलिए जो सरकार हमेशा सीखती है, हम लोग कभी मेंटली सैचुरेशन मोड में नहीं आते हैं। हमने कर दिया और कभी कोई चीज कितना भी कर दो इनफ नहीं होता है। बदलते समय के साथ बदलता रहना की आवश्यकता होती है। कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने देखा कि हमने इतना प्रयास करने के बाद और क्या कमी है, तो आउटपुट ये निकला कि अभी इंटीग्रेटेड लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। इतने बड़े देश में कहां क्या चल रहा है, कौन सा डिसीज चल रहा है, उसका इंटीग्रेशन होना बहुत आवश्यक है। ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, रीजनल और सेंट्रल लेवल तक एपिडेमियोलॉजी की लैब की श्रृंखला के द्वारा देश को जोड़ने की कोशिश की गई, ताकि कोई लास्ट पैमाने पर, कोई लास्ट लोकेशन पर कोई नया डिसीज दिख गया, जीनोम सीक्वेंसिंग में पता चला, तुरंत ही ऊपर फ्लैग हो जाए कि यहां कुछ इस टाइप का वायरस, इस टाइप का डिसीज देख रहा है, ताकि उसका इलाज करा जाए। वैसा ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिटिकल केयर ब्लॉक, कोई भी इमरजेंसी की स्थिति में, कोई पेंडेमिक की स्थिति में लोगों को इलाज के लिए दिक्कत ना हो, वहां वेंटिलेटर हो, वहां ऑक्सीजन हो, वहां ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी हो, ऐसा क्रिटिकल ब्लॉक 602 डिस्ट्रिक्ट में बनाने के लिए तय किया। 64,000 करोड़ रुपीस 5 इयर्स में पूरा करना है। 64,000 यानी कि देश में 640 डिस्ट्रिक्ट, अब काउंट करो, 730 है, तो उसका नतीजा ये निकलता है पर डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 80 से 100 करोड़ रुपया का खर्च आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत करना है। आंध्र प्रदेश ने अच्छा परफॉर्मेंस करा है, और जो स्टेट अच्छा काम करता है, हमारे रजनी जी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मेरे पास दिल्ली आती है, कई काम लेके आती है, भैया मुझे ये चाहिए, हमारे स्टेट में वो करना है, हमें क्रिटिकल केयर यूनिट बनाना है, हमें ये हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए ये मेडिकल डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, हमें मेडिकल कॉलेज बढ़ानी है। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर में एक समय था, हम कहते थे राज्य की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फंड के लिए जाते थे, पैसा दो पैसा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती थी उपकार के भाव से। दोस्तों, हम उपकार के भाव से नहीं मानते हैं, हम हमारी जिम्मेवारी समझते हैं स्टेट को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को हर संभव मदद करें, और इसलिए हम कहते हैं खर्च करो खर्च करो। मैं रजनी जी को एश्योर करना चाहता हूं कि आपके यहां हेल्थ सेक्टर में भारत सरकार की ओर से मदद के लिए कोई कमी नहीं रहेगी।
आप जितना खर्च करते चलोगे, ये 5 साल का प्लान है। आंध्र प्रदेश 2 साल में पूरा करे तो मैं 2 साल में सारा पैसा दे दूंगा। मैं सुबह में कृष्णा बाबूजी मेरे से बात कर रहे थे, मैंने कहा आप खर्च करना चालू करो, पैसा देने में मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर प्रयास करें। हम फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम कर रहे हैं। सेंट्रल और स्टेट अलग नहीं हो सकता है, स्टेट होके सेंट्रल बनता है। सेंट्रल की सभी के प्रति जिम्मेवारी है। जो प्रोएक्टिव काम करता है वो ज्यादा लाभ ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश प्रोएक्टिव काम करते हैं। मैं हमारी सत्यावती जी को अभिनंदन देना चाहता हूँ। ये एमपी है, वो बार बार मेरे पास आ जाती है, और जो ज्यादा मेहनत कर लेते हैं उसको थोड़ा फायदा भी हो जाता है। मुझे भी 3-4 बार आते हैं तो ऐसा लगता है कि 3 बार आई है तो चलो मदद कर देते हैं उसको। उसके हॉस्पिटल के लिए, उसके डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल होगी, भैया आप आना, वहाँ उद्घाटन करना। और धीरे से कहते हैं, मैं कहता हूँ किसका उद्घाटन करना, तो कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक का उद्घाटन करना है। तो मैंने कहा मैं आपको जब अलॉट करूं तब उद्घाटन करूंगा ना, तो कि इसलिए ही आई हूं। दोस्तों, ये मेहनत करने से आउटपुट होता है। जितनी जनप्रतिनिधि और सरकार एक्टिव मोड में काम करती हैं, आउटपुट अच्छा देखता है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम करती है। मैं रत्न जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन करूंगा। आप आगे बढ़िए, भारत सरकार हर संभव आपको मदद करेगी। धन्यवाद। ఈరోజు ఇక్కడ విజయవాడ పాత ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్లో 23 కోట్లతో కేంద్ర ప్రభుత్వం క్రిటికల్ కేర్ హాస్పిటల్ ఇక్కడ కేంద్ర మంత్రివర్యులు, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రివర్యులు మన్సుఖ్ మాండవ్య గారి చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. నిజంగా అభినందనీయం. నిజంగా నరేంద్ర మోడీ గారికి అట్లాగే కేంద్ర మంత్రి గారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు 2017 చివరిలో ఇక్కడ ఈ విజయవాడ ప్రాంతానికి ఒక మంచి తల్లి పిల్లల హాస్పిటల్ ఉండాలి, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్ అని చెప్పి ఆ రోజున దాదాపు 50 కోట్లతో ఇక్కడ శాంక్షన్ చేస్తే ఫౌండేషన్ వేసి ఒక ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తయిన తర్వాత పని ఆపేశారు డబ్బులు లేక. చేతులు ఎత్తేశారని చెప్పి ఆ రోజు నేను వెంటనే కేంద్ర మంత్రి గారికి, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారికి, అట్లా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ఈవెన్ కలెక్టర్కి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేశాను. మీ వల్ల పూర్తి చేయగలిగితే చేయండి, లేకపోతే మాకు అప్పచెప్పండి. కేంద్ర ఫండ్స్ నుంచి అయినా సరే, లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి దాతల నుంచి అయినా, ట్రస్ట్ నుంచి అయినా తీసుకొచ్చి ఈ కార్యక్రమం పూర్తి చేస్తామని చెప్పి నేను లేఖ రాయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత హెల్త్ మినిస్టర్ గారు స్పందించి ఇక్కడ క్రిటికల్ కేర్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనకి బడ్జెట్ ఇచ్చి ఒక ఫ్లోర్ కంప్లీట్ చేశారో దాని మీద నుంచి ఒక క్రిటికల్ కేర్ సెంటర్కి 23 కోట్లు, 18 కోట్లు బిల్డింగ్కి, అట్లాగే 17 కోట్లు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీ ఎక్విప్మెంట్కి ఇవ్వటం, నా అభ్యర్థన మీదకి ఇవ్వటం నిజంగా కూడా చాలా అభినందనీయం. అట్లాగే మీరు హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో చేస్తే పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైంది, ముఖ్యంగా నా విజయవాడ పార్లమెంట్ సంబంధించి. ఎందుకంటే ఆ రోజు 180 ఎకరాలు ఎయిమ్స్కి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంగళగిరిలో ఇస్తే 2000 కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెడితే ఇప్పుడు వరకు దానికి వాటర్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వడానికి ఎన్నిసార్లు అభ్యర్థించినా అక్కడ లోకల్ లీడర్స్ కానీ లేదా ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ కానీ ఇంతవరకు వాటర్ ఫెసిలిటీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రొవైడ్ చేయలేకపోయింది. ఎయిమ్స్కి బ్రహ్మాండమైన ఫెసిలిటీ 2000 కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం, 180 ఎకరాల రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇచ్చారు. అట్లాగే ఆ రోజు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి బీజేపీ